co-host. So yeah, this is one bhajan that I remembered from listening to one of my music gurus, Ravi Jule, who has been Manojji's music guru for many years, for decades, lifelong teacher of for him, but also for me, for some time. And he has been in the US at our house and stayed with us, and we had some very wonderful music experiences together. But in that process of listening to his bhajans, I just remembered this one which I used to sing a lot, then I've forgotten, and now I remembered it again. So here it is. बोलिक तारे झन 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 बोलिक तारे झन 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 कह कशा है मेरी सुमिरन शाम की सुर्खी मेरा कुंदन नूर का तड़का मेरा चिलमन तोड़ चुका हूँ सारे बंधन पूरब पश्चिम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलिक तारे झन 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 बोलिक तारे झन 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 हे बोलिक तारे झन 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 बोलिक तारे झन 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 मेरे तन में गुलशन सबके मेरे मन में जोबन सबके मेरे घट में साजन सबके मेरी सूरत दर्शन सबके सबकी सूरत सबकी सूरत मेरा दर्शन बोलिक तारे झन 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 बोलिक तारे झन 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 सबकी झोली मेरी झोली सबकी टोली मेरी टोली सबकी होली मेरी होली सबकी बोली मेरी बोली सबका जीवन सबका जीवन मेरा जीवन बोलिक तारे झन 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 बोलिक तारे झन 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 हे बोलिक तारे झन 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 हे बोलिक तारे झन 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 सबके काजल मेरे पारे सबकी आंखें मेरे तारे सबकी सांसें मेरे धागे सारे इंसान मेरे प्यारे सारी धरती सारी धरती मेरा आंगन बोलिक तारे झन 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 बोलिक तारे झन 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 कह कशा है मेरी सुमिरन
शाम की सुर्खी मेरा कुंदन, नूर का तड़का मेरा चिलमन, तोड़ चुका हूँ सारे बंधन, सारी धरती, सारी धरती मेरा आंगन, बोले के तारे झन 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 झन, बोले के तारे झन झन झन, हे बोले के तारे झन 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 झन, बोले के तारे झन। लिखा है जोश महराबादी ने. I first heard it from Jagjit Singh, and always loved it. So सब कुछ इसी में आ जाता है, बहुत कुछ इसी में आ जाता है. और जब ये एहसास होने लगता है, when you start living like this, yeah, the living of it, see, liking it very easy because the mind automatically likes something like this. Understanding it also easy because it's simple language, not high flown Urdu or Sanskrit or something like that. Simple language. सबके काजल मेरे पारे, सबकी आंखें मेरे तारे, सबकी सांसें मेरे धागे, सारे इंसान मेरे प्यारे, सारी धरती मेरा आंगन, बोले तारे झन 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 झन. और एक तारा, वो एक तारा इज इंस्ट्रूमेंट भी सिंपल. एक तारा टंग 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 कोई भी बजा सकता है. सो शब्द भी सिंपल है, भाषा सिंपल है, आइडिया सिंपल है, इंस्ट्रूमेंट सिंपल है, ट्यून सिंपल है. सो अंडरस्टैंडिंग इट इज वेरी सिंपल. Agreeing with is also very easy. You naturally agree with it. So agreeing with it is also very easy. So liking it is easy, agreeing with it is easy, understanding it is easy. Agreeing is easy, understanding, liking, singing it is also easy. It's a very simple song. You can learn it in 5 minutes. Not like Bhaj Govindam, all those Rag Malika. So very simple. But living it, ऐसे जीना, that is where the that is where the it is not as easy as understanding it and liking it and singing it. और आखिर में that is only what matters. If you liked it, okay, for 5 minutes you enjoyed it, you like it. If you like the song, you learn the song very good, you'll sing it and people will like the song and your voice and your tune and all that. But what is really, really important, what is really important is living it, living it moment to moment, living it in the middle of life, in the midst of all the chaos, absolute chaos. कितना कुछ हो रहा है एक पल में, if you really think about it. क्या कुछ हो रहा है लाइफ में. So many things are going on. My goodness. Even in one person's life, how many things are going on? And just one moment. One moment. Your millions and trillions of cells are doing reactions. They are taking energy, taking oxygen, doing chemical reaction. Trillions of them right now in your body. Some 6 trillion cells are there. So वो हो रहा है इसी पल में. विचार आ रहे हैं कुछ ना कुछ, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. The light is on and the photons are bouncing around. The sun is setting or sun has set already. Million things, so much going on. In the middle of this chaos, and out of those
some of the things we naturally like, and some of the things we naturally don't like and don't want, or at least this body mind doesn't want, doesn't like, doesn't prefer, and is busy trying to push away the things that it doesn't like, and is busy trying to get the things that it likes. So in the middle of all this chaos, in the middle of all this chaos, in the middle of all this chaos, सबकी सांसें मेरे धागे, सारे इंसान मेरे प्यारे, सारी धरती मेरा आंगन. Can we live like that? So, so that's the challenge, and that's the challenge, and that's why we are keeping on meeting. That is why we are keeping on having things to share and having things to say, because we are still all on this journey together, and all of us are on that. And so ये जानते हुए भी not easy, right? Not easy. So when so what to do when we forget, and what to do when we cannot do this, when we cannot bring that to this, क्या करें? Like, मैं भी ये बातें करता हूँ आपके साथ, और काफ़ी कुछ स्टडी किया है, काफ़ी कुछ मेडिटेशन किया है, काफ़ी कुछ समझा है, फिर भी कई बार कुछ ना कुछ हो जाता है जहाँ, like today I was on the tennis court. Just before this, I was on the tennis court playing with one of the what they call marker उसे बोलते हैं. They are like professional tennis players. So if no other players are there, the marker will play with you, so you can have a good game. तो एक मार्कर के साथ खेल रहा था, ना हमारी कुछ बात हो गई. He had put a string on my racket which was supposed to be of a particular quality, and I had to pay him for that high quality string. But as far as I could tell, the string was not of that high quality. It was supposed to have the marking of the company that makes that string, particular company. The marking wasn't there, the thickness wasn't right, the feel wasn't right, and yet he insisted कि ये नहीं नहीं ये तो वही quality का है. And and I said, okay, you show me the marking on the original ring. And I kept trying to be reasonable. And he just went off on a tangent. ठीक है, पैसे मत दो आप, don't, पैसे मत दो, लेके जाओ आप, कभी हमारे पास स्ट्रिंगिंग मत कराना, पैसे भी मत देना. और ये मैंने कहा, यार मैं कहाँ कह रहा हूँ पैसे नहीं देंगे. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, आई वांट टू मेक श्योर इट्स द राइट क्वालिटी. अगर नहीं है तो इसको रिप्लेस करके इसका भी पैसे दूंगा, और जो दूसरी क्वालिटी चाहिए उसका भी मैं दूंगा. बट ही जस्ट केप्ट गोइंग, नो नो नो, आपने कराई, आपको विश्वास नहीं है, आपको ये नहीं है, आपको वो नहीं है, पैसा मत दो, चाहिए तो. एंड and as this is going on in my mind, okay, mind you, this is going on in my mind, bring that to this, bring that to this, bring that to this. How to bring that to this, how to bring that to this, ये चल रहा है मेरे दिमाग में. And yet just all I was asking was something reasonable, but no. So but still, how to bring that to this? And I lost my cool, and I just hit the ball hard, not at him, against the wall. I just hit the ball so hard against the wall behind him. And the next 3-4 points I was just hitting the ball like a madman, because I just was so full of anger. And all the while, so then he said, sir, ठीक से खेलना है तो खेलो.
And again I was like, how to bring that to this, how to bring that to this, how to bring, मेरे दिमाग में यही चल रहा है, I'm not able to bring that to this, I'm not, how do I bring that to this, how do I bring that to this? And and I just looked at him, and I looked at him, and I looked at him. And I didn't know what to say and how to say it. And he's very young, okay? He's very young. छोटा सा लड़का है, मतलब he's hardly 23, 25 years old. A young boy. He's not like some, and so he has a lot to learn about sportsman spirit, about how to deal with people. And I was thinking he needs to learn. I mean, I have a lot that he needs to get from this. Other than being a good tennis player, you need to know how to be. And and I just stopped. I just stopped and I was staring. And my next move was a choice to again like hit the ball in anger or be angry and on. And I kept looking at him, kept looking at him, and I, in my mind, it's going on how to bring that to this, how to bring that to this, how to bring that to this. And I said, I don't know how the hell to do bring that to this in this situation. I don't know what to say, what to do. And I looked at him, and then I said, let me just stop. I'll just pause. And I looked at him. And as I'm looking at him, I just burst out laughing. I just started laughing. I said, Chal yaar, chhod sab. And I gave him, I had to give him 1,000 rupees. So I gave him 2,000. I said, Chal tu छुट्टे कल ले आना, जब भी मिलेगा, बाकी का कल दे दे. Let's play tennis. And then we had a good game of tennis after that. But so जहां दिमाग काम नहीं करता है, actually, even in this responding, how to bring that to this, when the intelligence also doesn't work, the nothing works, but somehow the silence and the pause, just keeping on saying this, saying this, saying this, saying this, and I was able to just come to laughter, and let the situation just diffuse. But I, during those 3 or 4 shots that I hit hard and I was so struggling, I said, here we say on Open Door to everyone, I'm saying to everyone, bring that to this. And how difficult it is, how difficult it is. It's not easy. This sadhana is not easy. Uh, it's a tough road. The only thing we have going for us is we know the road. Knowing the road doesn't make the road any easier, but at least we know the way. We know the way. Our eyes are open, and we know which direction to go in. यही काफी है. So just that. And yeah, so so, and then again I was putting this song into that context. um हम बोल तो लेते हैं सारे इंसान मेरे प्यारे, but in those moments it is hard to be in touch with that idea. Even this guy, is so it's a journey. It's a journey. It's a journey. It's an interesting, challenging, beautiful journey. But the point is that because of this conversations, this, in even in the middle of my, my heart is pounding, my breath is racing, and my body is going, "Arr!" Even in the middle of that, this thought kept coming, kept coming, kept coming on its own. How to bring that to this? How to bring that to this? How to bring that to this? So this is the sadhana for all of us. कैसे उसकी जो गुण है, उसके जो गुण है, उसको इस पल में मैं कैसे व्यक्त करूं? So anyway, that happiness video that we watched. Any thoughts on that question that I had asked? अगर ये दुनिया जो है
इसमें कुछ रखा ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट होल आर्ग्यूमेंट, कुछ रखा ही नहीं है। एवरीथिंग इज, आज तुमको जो पसंद है कल वही एक दुख का कारण बन जाएगा, या ज्यादा प्रमाण में मिल गया तो वो भी एक दुख का कारण बन जाता है, और उस सुख को अनुभव करने के लिए और दुख सहन करना पड़ेगा। तो ऐसी दुनिया को क्या करना गया है, अभी छोड़ दे क्या? इज दैट द आंसर? सो what are your thoughts on that? Should we just all संन्यास ले ले और निकल निकल जाए जंगल में? हाँ पांडे जी। छोड़ना है, लेकिन दो तरह से नहीं छोड़ना है। एक तो शरीर से नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो कुछ है इसी काया में है, बगैर काया के कुछ भी नहीं है। चाहे वो माया हो या देवत्व हो, दोनों इसी काया में है। वाह क्या बात है, क्या तो बात है। तो जो कुछ आ रहा है वो वहीं से आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो पहली बात ये कि शरीर से नहीं छोड़ना है। दूसरा ये है कि छोड़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि उससे दूर चले जाना है, जो हम लोग इतने समय से सीखते आ रहे हैं। इवन सन्यास की जरूरत नहीं है, वही राग इज इनफ। राग जहां हुआ वो सब गड़बड़ा कर देता है। मेरा तो इवन मेरे साथ अभी आप लोगों के साथ रहते रहते इतना बढ़िया होने लगा है कि इवन मेरा कोई बहुत बड़ा कुछ नुकसान हो गया, कोई कुछ ले गया, ठीक है यार, मेरा ठीक नहीं था ना, जाने है। दो, जाने कोई दो। फर्क नहीं। बल्कि इस स्वभाव के कारण कई बार बीवी से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, बिकॉज हाँ, वहां तो कुछ राग बोलते ही नहीं नहीं हो था। आप तो, आप तो हाँ कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, अरे इतना बड़ा नुकसान हो गया एंड यू आर नॉट बॉदर, यू ये क्या नो, बात है? करेक्ट। तो फिर वहां पर दूसरा वैराग अपनाना पड़ता है कि बीवी जब नाराज हो तो वो भी कोई बात नहीं, छोड़ो। कोई कोई बात नहीं। वो भी ठीक है। बस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इवन आज कोई लेडी, किसी महिला ने हमारे ग्रुप में आपको प्रश्न पूछे हैं उन्होंने कि इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, इसी से तो जीवन है। करेक्ट। तो आप पहले भी आपने कहा था कि इच्छा महत्वाकांक्षाओं को मारना नहीं है, चलने देना है। भाई मुझे अगर कार चाहिए तो चाहिए, कोई बात नहीं, कार मिल गई, बहुत बहुत अच्छा। नहीं मिली, कोई बात नहीं, मेरी साइकिल दोपहिया क्या कम है, राइट। एंजॉय। एग्जैक्टली। थैंक यू। एग्जैक्टली, वंडरफुल। वेरी नाइस। साइकिल नहीं मिली तो टांगे क्या कम है। अरे आज हम लोग टांगे टांगे, यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। या। अभी क्या हुआ, हम जबलपुर गए थे, हमारा वी आर नाउ स्टेइंग एट भोपाल। जबलपुर इज माय नेटिव प्लेस, कार मेरा भोपाल में है। तो वहां पर हम जो है, मेरे भाई बहुत बोलते नहीं कि एक अपन गाड़ी यहाँ रख देते हैं, सेकंड हैंड लेके रख देते हैं जबलपुर। मैं कहा ना यार, कम से कम हम वहां पर साइकिल रिक्शे में चलते हैं हम लोग, बड़ा मजा आता है। जहाँ साइकिल रिक्शा नहीं मिलता वहां पैदल चलते हैं। करेक्ट। जो कहते हैं ना प्रोसेस, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। दोनों मियाँ बीवी यंग की तरह बैठे हुए साइकिल रिक्शे में जा रहे हैं, राइट। मजा आ रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। मैं तो वो एक कहाँ थे हम, याद नहीं आ रहा है, शायद उदयपुर जयपुर कहीं तो थे जहाँ साइकिल रिक्शाएं थी, और हम जा रहे थे, हर्षा और मैं, कहीं साइकिल रिक्शा में। तो मेरा तो ऐसा स्वभाव है कि मुझे तो साइकिल रिक्शा भी चलानी है। मैंने उसको पीछे बिठा दिया और मैं साइकिल रिक्शा चला रहा हूँ। बोला साहब आपसे नहीं होगा, नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, नहीं कैसे होगा? तो थोड़ा बहुत चला लिया। राइट। सो द अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज अवेलेबल टू एंजॉय, द अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज अवेलेबल। ग्रेट, वेरी वंडरफुल, वंडरफुल। और एनी अदर थॉट्स, एनीवन? दुनिया छोड़ दे, सन्यास ले ले। या नीलिमा जी, अनम्यूट। तभी भी पल्लवी। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे आपने पढ़े होंगे शायद। आई वांटेड टू नो जनरल, अभी ये हम क्या करते हैं उसके आंसर है कि क्या करना चाहिए, बिकॉज हम ओपन डोर पे है। बट ओके। जनरल आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम किसी को बोलना है या हम्म। समझाना है,
उस एटीट्यूड को उतारने के लिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन यही था एक्चुअली, परिभाषा क्या है मुझे पता होके भी, अभी जेनिफर मैम और हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे आप आने के पहले भी। ओके तो आई वांटेड द पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से नॉर्मल पर्सन, एक बंदा, उसको ऐसे बोलना है चलो नहीं है साइकिल तो जाओ, नहीं फ्लाइट है, लोगों को तो है गाड़ी में ही जाना, तो वो इच्छा है। जो मेरा क्वेश्चन ही अलग था, मेरा क्वेश्चन था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए किसी को। आपने पहले भी हमने सुना है कि चलो हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है। The attitude what will not help when you have some ambitious or you want to do something. अनामिका ने भी मुझे एक बार शायद आपको वो क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था, आई हैव अ गुड एम्बिशन है तो करनी नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यू दैट टाइम आल्सो यू टोल्ड छोड़ दो हो जाएगी। द आई मैं कन्विंस ही नहीं हूँ इस एटीट्यूड को। आई वांट द एक्सप्लेनेशन कि जनरल लोगों को हाउ, मतलब है तो है और नहीं तो नहीं है, अगर अपने मन में जब पता चलता है वो हम एम्बिशन को छोड़ देते हैं क्योंकि हम लेजी बनते हैं। मैंने ये सब आपने जो जो पढ़ा ना मैंने सब मतलब ये आजमाए हैं। सो आई आज सुबह उठने के बाद मैं 2 दिन देख रही थी ग्रुप में किसी ने नहीं लिखा, तो आज मैं हाँ सुबह के उठने के बाद पहला बेड पे ही मैंने वो क्वेश्चंस लिखे जो मैंने आपको ग्रुप में लिखे हैं, ओके because I want a deep understanding of that. I don't want a करेक्ट general attitude, so we already have that. Everyone has that. Because करेक्ट that's why we are in open door. Why we are करेक्ट in open door? क्यों बंद के रखा है? कोई आए भी नहीं, मैं 2-2 महीने नहीं आई हूँ, बट मैं हाँ देखती हूँ वीडियो में, मैं बंदी हूँ इस ग्रुप से। Why? Because of that attitude. हम उसी करेक्ट तरीके से जीते। But करेक्ट I want the explanation through the normal people. बच्चों को नहीं बोल सकती छोड़ दे तेरी इच्छा, दुखी है वो, ये है। राइट You can't राइट stay like that. जैसे राइट उन्होंने घर का बताया था, घर लेना नहीं मतलब यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू, बट तभी भी वो बोल आप सिर्फ समा बोल के नहीं होता, अगर वो इच्छाएं नहीं होती है, मैंने एक बार सुना है, तो फिर हमको आगे जीने का मतलब ही नहीं है। जो करेक्ट है ठीक से है तो करेक्ट 9 to 5 करेक्ट काम करेक्ट करता है, करेक्ट खाना खाता है, डब्बा खाता है, आज ने दिया तरी सब्जी अच्छी है नहीं है मैं खा लेता हूँ, इट्स गुड। ये एटीट्यूड से जीना कितना मुश्किल है। हम्म मतलब राइट मुश्किल ही नहीं, फिर लाइफ को वो जो कलरफुलनेस आया है ना, दैट ऑल करेक्ट कलर, लाइफ इज कलरफुल, करेक्ट वी करेक्ट ऑलवेज एक्सप्रेस इन द डिफरेंट वे। उस करेक्ट कलरफुल को, उस कलर को पकड़ने के लिए ही इच्छाएं हैं, दैट्स करेक्ट दुख की कल्पना एब्सोल्युटली है। एब्सोल्युटली हाँ, इसका मिडवे वो आंसर है वीडियो, मैंने बहुत गहराई से 2-4 दिन सोच रही, मिडवे है, लेकिन जिंदगी में उतार पाने के लिए देयर शुड बी सम वेज। तो नॉर्मल करेक्ट पीपल, अगर आप करेक्ट हमको नहीं बोल रहे हो, वी आर करेक्ट नॉट योर स्टूडेंट, हाउ यू विल गिव द आंसर्स टू द पीपल। करेक्ट 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 नहीं सो एक तो बात यह है कि किसी को भी कहना, आपको कहना, किसी और को कहना, इट्स ऑल द सेम, देयर इज नो, एवरीवन हैज द सेम challenges and the same thought process, कोई अलग नहीं है. Secondly, this understanding is not necessarily किसी को कहने वाली बात नहीं है, अपने लिए है, खुद के लिए है. That is second. Third is ये लाइफ जो है, हाउ सो ये जो वॉट एवर इज अवेलेबल, ये बाहर की दुनिया, ये शरीर वाली दुनिया, अनुभव वाली दुनिया. So the one way, see, there are 3 or 4 stages. One stage is where normal 99% of the population looking for happiness in this world, trying to find it, sometimes finding, most of the time missing. Even if you find, soon that same thing goes away and you're in a cycle of effort and then little disappointment and then maybe little joy for a minute and then again disappointment again. That cycle wo chal raha hai. Most of them are there. Then second is the person जिसको समझ में आ गया कि यार ये सर्कस में कोई मतलब नहीं है, ये सर्कस करने से कुछ ज्यादा, कुछ जो मुझे एक्चुअल चाहिए, दिस एवरलास्टिंग पीस, डीप जॉय, बिना वजह का आनंद जो मुझे चाहिए, जो किसी पे निर्भर ना हो, किसी वस्तु पे, किसी परिस्थिति पे, किसी व्यक्ति पर निर्भर ना हो, वैसा वाला जो आनंद है, just for the sake of life itself, the joy of being alive, the joy of awareness, the joy of consciousness, the joy of uh, just being, वो जो joy है, which is not dependent on experience, वो वाला joy चाहिए. तो ये सब, then that second stage comes कि ये सब व्यर्थ है, सब छोड़ छाड़ के वैराग्य में आ जाते हैं. Okay, so
The third stage, which is what we can understand, is कि ये दुनिया अगर एक आनंद और सुख का अगर सोर्स नहीं है, तो ये ही दुनिया सुख और आनंद का डेस्टिनेशन तो जरूर हो सकता है. This world is available as a destination of happiness. अगर मैं खुश हूं, आनंद में हूं, तो मैं ये खुशी, ये आनंद लेके क्या करूं, क्या कहां जाऊं, क्या करूं इसको मैं. I am happy. I'm so thankful for life. I'm so thankful for my breath. I'm so thankful for being alive. For every experience, I'm thankful, and I'm just enjoying for nothing. Now what? Now what? Now this whole world is available. ये दुनिया अवेलेबल है. एक कैनवस कह दो जिसपे मैं जो चाहूं रंग भर सकता हूं, खुशी के रंग भर सकता हूं. पहले मैं ये कैनवस में से मैं खुशी ढूंढ रहा था. वो कैनवस में खुशी थी ही नहीं, और गलती से थोड़ी बहुत मिल भी गई, वो भी चली जाती है. फिर मुझे पता चला कि यार ये कैनवस में खुशी नहीं है. खुशी का स्रोत, सोर्स मैं हूं खुद. तो अब मैं ये कैनवस का क्या करूं? अरे भर दो ना इस कैनवस को रंगों से, आपकी खुशी के रंगों से. निकालो 100,000 रंग और भर दो इसको. व्यक्त करो. और अगर व्यक्त करना है आपको ये आनंद, तो ये कैनवस नहीं होगा, ये रंग नहीं होंगे, ये पेंट नहीं होगा, ये ब्रश नहीं होगा, तो आप कैसे व्यक्त करोगे? सो इसीलिए जो आप कह रहे थे पांडे जी, शरीर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी में तो है देवत्व. और ये अगर देवत्व मुझे व्यक्त करना है तो शरीर चाहिए मुझे, ये दुनिया चाहिए मुझे लोग चाहिए जो मुझे अपने प्रेम के साथ जुड़ने के लिए और व्यक्त करने के लिए एक मौका दे. या तो बड़े अच्छे बनकर, प्रेम के मतलब ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद है, जिसको मैं नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से मुझे उनसे प्यार हो जाता है, और प्यार व्यक्त करने की इच्छा होती है, और प्यार व्यक्त करने का मौका दे रहे हैं वैसे लोग. या फिर वैसे लोग जो उसके विपरीत है, जिनको मैं जब घूम फिर के उनको भी प्यार करने तक पहुंच जाता हूं, तो उनको प्यार करने का अनुभव और आनंद और ही है. जो व्यक्ति मुझे नहीं पसंद है, जो व्यक्ति किसी भी वजह से, उनमें मैं अगर देवत्व देख पाता हूं और उनको गले से लगा सकता हूं, तब जाके जो आनंद का अनुभव होता है. तो ये लोग हैं, ये लोग नहीं, सिर्फ वस्तुएं हैं, परिस्थितियां हैं. जो अच्छी लगती है उनमें तो मैं नाचता हूं, कूदता हूं, आनंद व्यक्त करता ही हूं. और वो अच्छी लगने वाली जगह है, परिस्थिति है, तब जाकर मुझे ये आनंद को व्यक्त करने का मौका मिल रहा है ना. वरना मैं क्या करूं? वो एक सॉन्ग है, कौन सा है? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, बेचैन दिल को कैसे आवाज दूं. इस प्यार को, तो प्यार को नाम देने के लिए मुझे वस्तुएं चाहिए, लोग चाहिए, चीज चाहिए, परिस्थिति चाहिए, ये दुनिया चाहिए. ये प्यार को नाम देने के लिए, इस प्यार को जगह देने के लिए, इस प्यार को वजह देने के लिए. तो जो परिस्थितियां हैं जो मुझे पसंद नहीं है, वो भी, उनको भी मैं कैसे एक चुनौती की तरह ले लूं.
और वो भी एक डेस्टिनेशन बन जाए प्रेम और मेरी मेरा जो मेरा जो असीम रूप है उसको अनुभव करने का मौका वो चुनौतियों में से ही तो मिल रहा है मुझे। तो चाहे रास्ता तो अ, तो दुनिया इसीलिए चाहिए, नहीं कि मैं इसमें ढूंढता फिरूं पागल की तरह सुख के लिए। दुनिया इसीलिए चाहिए कि मेरे अंदर जो खुशी है, आनंद है, उसको मैं बांट सकूं, उसको मैं दे सकूं, उसको मैं व्यक्त कर सकूं, उसमें मैं रंग भर दूं, अपने रंग जी भर के, पूरा दिल से। और उसमें जो आनंद है वो बिना वजह का आनंद है, क्योंकि मैं वहां ढूंढ नहीं रहा हूं आनंद को। So that is where ambition comes in. Ambition for business also, not because I want to be happy if I have a good business. Okay, I'm going to look for happiness in my business. So that is the old way. I look for happiness in my business. Whenever the business does well, I am happy. Whenever the business goes down, I am sad. And eventually, even if the business does well, I don't find happiness even in that business, because I want even more business. And then when it even becomes more, then I want even more. And ultimately, I am keeping on looking, searching for happiness in that business. That is the stage number one. Stage number two is I realize that, oh my goodness, this business is not where my happiness lies. And so in that video, that is the one, they stopped at the second stage. So because that Subodh कहता है उसके पिता को कि मैं बिजनेस क्यों ज्वाइन करूं, मुझे वहां नहीं मिलने वाली खुशी. So he's only at the second stage because he knows that he cannot find happiness in the business, and now he wants to withdraw and just be in himself and find that in himself. Now you and I are at the next stage after that. We already know where the love lies, where the truth lies, where the beauty lies. It lies in me. It lies in my awareness. It lies in my consciousness. So we go to stage 3, where we don't say, I'm going to leave this business because the business doesn't bring me happiness. We say, I know my happiness is in me. Now, how do I take this happiness and express it through my business? How can my business become a place where I jump, where I dance, where I love people, where I interact, where I bring my creativity, my great ideas, my thoughts, my knowledge, my skills, my ability to work with people, to build a team, to love everyone, to include everyone, to take them along. How do I bring all that to this business and express all of this? So stage 3 mein you again go back into the business. It is only in the halfway stage that you say, I'm going to leave the business. That is the sannyas culture. What is the third stage is known as the rishi culture. The rishi culture. And this is why SSY is so powerful. It is based not on sannyas culture, but on rishi culture. That is why the name also is Rishi Samskruti. And this whole direct path and this whole non-duality, oneness, Advaita is based on Rishi culture. The one who has understood, the Rishi Munis, if you remember, were not sannyasis. जो भी ऋषि हो गए हैं वो गृहस्थ थे, उनके संसार थे, उनके बच्चे थे, उनकी
उनका फैमिली था, उनका व्यवसाय था, उनका जो भी, दे वर स्टिल पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड and yet living simply but living powerfully and living with lot of love and lot of joy. So this is what that missing part in that video is, this third stage. So you and I have the opportunity to live in that last stage, the third stage, in this body, in this world, with this business, with this family, with this challenges of life, and in the middle of the life, keeping on bringing that awareness of stage 2, which is, अरे ये मैं नहीं हूं, मैं तो वो हूं. स्टेज 2 का जो ज्ञान है उसको भूलना नहीं है. वैराग्य का जो ज्ञान है उसे भूलना छोड़ना नहीं है. उसको भी स्टेज 3 में लाना है, साथ में लाना है, जानते हुए कि ये सब मैं मेरा नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे, इवन दिस बिजनेस, नो मैटर हाउ मच इट फ्लरिशेज, इज जस्ट अ गेम, is just what I have created to play. When I know that, then whether the business goes up, wonderful. If business goes down, okay, opportunity to grow. Business goes up, opportunity to grow even more. Then you're not in the roller coaster. Then you are the master. You are in command. You are playing the game like a master. So the where the video ends, leaves, we take it from there and we go to the next stage. And I think this understanding will probably answer all the questions that you have, because we go move to stage 3, and that is where we live our lives. And the whole sadhana from this moment on is how to more and more bringing that awareness and knowledge of stage 2 into stage 3, again and again, over and over, more and more. Let it be पुनर्प्रवेश. Puna Pravesh. Exactly. The stage 3, which is the Puna Pravesh वाले जो stage है, उसमें जो stage 2 में हमने जो आत्म गुण ज्ञान का एहसास हुआ, जो समझ में आया, वो stage 2 वाला आत्म गुण ज्ञान हम कैसे पुनः प्रवेश में हम ला सकते हैं, कितना ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं. There is no limit. There is no limit to it. And the more we bring of that, the more the miracle, the more the joy, the more the laughter, and the more the beauty, more the love, which is what we really want. Anyway, वही तो चाहिए. Great. Any other? Thank you for that. This is very different answer. कि इतना कुछ Correct. आपने कह लिया कि एक स्टेज पे आनंद है, परमानंद मिल गया, अगर ऐसे लग रहा है तो बांटो. Give to the Exactly. society and Exactly. see the big, when you are seeing the big canvas, show to the people that Correct. Correct. this is a procedure. I think जो भी हम आगे का जो जन्म है, मतलब मरने तक का जो सफर है, Right. अगर इसको समझ के जिए तो मुझे लगता नहीं कुछ आंसर्स बचे हैं. And Exactly. thank you for that answer, and it's a very different eye-opening thing for us. Wonderful. Wonderful. Thank you. Thank you for that opportunity for clarity. And again, the understanding is not difficult. This understanding is not difficult. Anyone can understand. The challenge is living it, moment to moment, in every action, every word, every person, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति में उसको देखना, उसको जानना, उसको समझना और उसे व्यक्त करना. तेरा तुझको अर्पण कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण. How beautiful that is. What is it? That is what it means, because it is anyway all yours. फिर भी तू ही तुझे अपने आप को तू अर्पण. सर इसी में जिंदगी कटेगी. हर एक के प्रश्न अलग, हर एक की समस्या अलग, और उसको देखना और Exactly. समझना अलग. तो Exactly. लॉट्स ऑफ पर्सपेक्शंस का जो डायमेंशन मिलेगा वो लाइफ Right. का अलग अलग. Right. Right. दैट इज Right. ऑल लाइफ. मुझे लगता है कि Exactly. और और हर वही एक, साधना है. दैट इज अ वही साधना. साधना, वही साधना है. और हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग है. वंडरफुल.
हर एक का अनुभव अलग है. तो we are looking at the 7 billion of us are experiencing this same reality from million points, million different, but the source, the destination, तेरा तुझको अर्पण, same, that same one, the oneness. Wonderful. Great. Thank you, thank you, thank you. I bow down to the divine that is present where you are. Pallavi, I hope you are following. ज़्यादा कुछ हिंदी में होता है. I'm not sure you are familiar with Hindi or not, but hopefully between English and Hindi you are following. And everyone also. Great. So using this understanding, Nilimaji, maybe you can write your own understanding as a response to your questions. Okay. So, and then maybe if I have something to add, I will. Great. Thank you, thank you, thank you. Hari Om Tat Sat.